on. Okay, Okay, so you have to prepare notes. fine. ठीक है, हम start करेंगे. Okay, हम start करेंगे. Our point is resolution of a vectors. Resolution of vectors. Here we can split one vector into the on the other components. These components may be two component or maybe three component. It is depending on the coordinate system in which the vector is given. Okay. See okay, we will continue. I am sharing the book here, textbook. So you can see which point I am actually here explaining. Just 1 minute. See here. Already I have explained the topic resolution of vectors. Again I am explaining in a short. Vectors can be written as a sum of two or more vectors. See here, one vector v bar is given. It is given in the form of sum of two or more vectors v1 alpha cap plus v1 beta cap, v2 beta cap plus v3 gamma cap. Here the vector v bar is splits into the three different vectors, and these three different vectors are along the three directions alpha cap, beta cap and gamma cap. I will explain you this with the help of figure also. First, try to understand if any vector is a given, if p bar is a vector given, we can write this p bar is p1 alpha cap plus p2 beta cap plus p3 gamma cap. Here P1, P2, P3, these are the three vectors and are called as component of P bar. P bar के ये तीन component है और ये तीन की direction along alpha cap, along beta cap and along gamma cap respectively. Direction of P1 along alpha cap, direction of P2 along beta cap and the direction of P3 along gamma cap. Here, see what is alpha, beta and gamma. Alpha cap, beta cap and gamma cap are unit vectors along a chosen direction. कौन सी डायरेक्शन चूज की है हमने? उस डायरेक्शन में ये तीन वेक्टर रहेंगे और इनकी मैग्नीट्यूड रहेगी यूनिट वेक्टर्स, so called as a unit vectors. Now listen the definition of resolution of vector. The process of splitting a given vector into its components is called resolution of the vector. यहाँ पर v1, v2, v3 are known as the component of v along the three direction alpha, beta and gamma, and hence this is the resolution of the v bar.
Okay, see here in the figure also. See, in the figure, here one vector r bar is given, one vector r bar is given, and it is represented by vector OC bar. Here one vector we are going to consider r bar, which is equal to actually OC bar, right? And here that vector is uh, making an angle theta with the x-axis. And now we are going to find the components. Okay, along which directions these components are. See here, if the components of r bar are along x and y axis, then these components are mutually perpendicular and they are called rectangular components. These components are called as rectangular components. Okay, now let us see how to find rectangular components in the two dimension. ये दो components कैसे find out करते हैं ये हम देखेंगे. Which are the two components? Listen, here r bar is a one given vector. Rx is the one of the component and Ry is other component of r bar. See in the figure once again, r bar is the one given vector, Ra and Ry be the components of the vector r bar, and we are going to find out these rectangular components. Okay, see how we can find out the component. Consider, sorry, consider a vector r bar is equal to OC bar. Vector r bar is equal to OC bar originating from the origin of a rectangular coordinate system. यहाँ से वो start होता है vector and here a rectangular coordinate system is given. Okay, rectangular coordinate system is given. Now we have to find out the component of r bar means rx and ry. ये कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करने के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर सी फ्रॉम सी दैट मीट द एक्स एक्सिस. क्या करेंगे यहाँ पर, सी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट तक. सेम ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एट पॉइंट बी. ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया एंड रेक्टेंगुलर इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम आल्सो. सी इन द फिगर हियर rx be the component of r bar along x-axis and ry be the component of again r bar but along the y-axis. And here by using the law of parallelogram for vector addition, यहाँ पर देखो अगर हम law of parallelogram यूज करेंगे for the vector addition तो हम ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन का, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये दो साइड्स है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स. अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं rx एंड ry, देन देयर सम इज, उसकी सम क्या आएगी, देन देयर सम इज द diagonal of that parallelogram originating from the same point. वही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला डायगोनल उस दो वेक्टर की एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर होगा. ठीक है, ऐसे हमने देखा था. देन स्टूडेंट प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. ओके,
Here now I can't delete, I can't clear whatever I have done here. Please don't write anything on the screen. I think somebody has locked the screen. I can't delete that whatever I have done on the screen. Please don't do anything on the screen. Okay. Just now I am again sharing the screen. Okay. See here. So according to the law of parallelogram, Krishna, please don't do anything. Krishna, please stop it. Here by using the law of parallelogram, R bar is equal to Rx plus Ry bar. This is the law of parallelogram. These are the two adjacent sides of the parallelogram. If we add these two sides, the resultant is the diagonal. Therefore, R bar is equal to Rx plus Ry. Then that Rx and Ry we can write in the form of unit vector and which already I have explained you. मैंने पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि आर एक्स ये वेक्टर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो आर एक्स बार इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बस वो डाल दिया है, वो इक्वेशन में वैल्यू पुट की है. तो and we can write Ry bar is equal to Ry j cap. Okay. See here in the equation 12, these values are written and equation 2.13 is obtained. Where the I and j means I cap and j cap are the unit vector along the x and y axis respectively. And see here, what is the difference in Rx bar and only Rx? Their bar is not written. Only Rx is the magnitude. वो क्या है? Magnitude है. Rx magnitude है and Rx bar ये वेक्टर है और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड Rx है. Okay, unit vector we can write I cap is in the form of Rx bar upon Rx. Only Rx we can write in the mod sign also. Mod means simply represent magnitude and it is not a vector. Rx, only Rx, ये this is not a vector, it is only the magnitude. ठीक है, तो यहाँ पर सुनो, I cap and j cap are the unit vector along x and y axis respectively. Only Rx and Ry are the magnitudes of the two components of R bar. दो कंपोनेंट R बार के कौन से हैं? Rx बार, Ry बार और इनकी मैग्नीट्यूड है Rx, Ry. So we can write the vector in this form also. Now we are going to find out the magnitude of that R. वो जो R vector है उसकी magnitude find out करेंगे. Listen students, this is a very important topic and this is the basic knowledge for your higher studies. After 12th standard, you will choose engineering and some other fields. In that all fields, this is the basic knowledge and which is very important. You should know how to calculate the resultant vector, magnitude of that resultant vector and direction of that resultant vector. Here R bar is a resultant addition of these two vectors, or we can say R bar is a given vector in a two-dimensional coordinate system. In the two-dimensional coordinate system,
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार. ऐसे भी लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, और सिंपली आर भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए. तो देखो अभी यहाँ पर वन एंगल थीटा बी द एंगल मेड बाय आर with the x-axis. See the figure. In the figure, see here, the angle theta is shown which r bar made with the x-axis. यहाँ पर r bar और x-axis के बीच में थीटा एंगल है. तो फिगर में से हम लिख सकते हैं cos of the theta. cos of the theta क्या आएगा? adjacent side upon diagonal. adjacent side क्या है? rx upon diagonal क्या है? r bar. ये हो गया cos थीटा. ठीक है. और साइन थीटा का क्या होगा? बोलो. अपोजिट साइड अपॉन डायगोनल. अपोजिट साइड तो CA है एंड डायगोनल आर बार है, तो मैंने डायगोनल लिख दिया आर बार. CA अपोजिट साइड है, बट हियर this is a rectangle or we can say parallelogram also. If this side is congruent with this side, right? But BO is RY, therefore CA also we can write RY. ओके, ये CA भी हम RY लिख सकते हैं. तो साइन ऑफ द थीटा रेशो क्या आ जाएगा? RY अपॉन R बार, because this is the opposite side of the angle theta, right? थीटा के opposite side का opposite side क्या है? R बार एंड डायगोनल है R बार. तो साइन थीटा आ जाएगा RY अपॉन R बार. See here, again I am going below the figure. See, cos theta is Rx upon R and sin theta is equal to Ry upon R. ठीक है. तो Rx हम लिखेंगे R cos theta. इसी इक्वेशन से we can write Rx is equal to R cos theta and sin theta is equal to Ry upon R, or we can write Ry is equal to R sin theta. ठीक है. इक्वेशन 2.14 and 2.15. If we squaring and adding equation 2.14 and 15, we get. Take the square on both sides here also and add the equations. Then we will get r square cos square theta plus sin r square sin square theta. ये साइड का स्क्वायर और एडिशन हो गया. r square cos square theta plus r square sin square theta. And then rx square plus ry square. Rx square plus ry square means squaring and adding the equations. But here cos square theta plus sin square theta is 1. Hence left hand side there is only r square remaining, and in the right hand side rx square plus ry square is remaining. Take the square root on both sides of this equation. Equation 2.16 is obtained. Take the square root. यहाँ पर r square है तो यहाँ r आ जाएगा. But here is addition, so we cannot write here rx plus ry simply. This is the bracketed term. We have to take the square root of rx square plus ry square, and this equation gives the magnitude of vector r. ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r. तो r की ये मैग्नीट्यूड हो गई. डायरेक्शन क्या है r की? हियर द वेक्टर r मेकिंग एंगल थीटा विथ x. सी हियर, r ने x के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो वो थीटा एंगल ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ r बार. बट फॉर दैट वी हैव टू टेक tan ऑफ द रेशियो, tan थीटा. तो tan थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड.
अपोजिट साइड है CA एंड एडजेसेंट साइड है OA, CA upon OA. But CA we can write RY because opposite sides of parallelogram are congruent and OA is RX. Therefore, tan theta is equal to RY upon RX. ठीक है, नेक्स्ट ये इक्वेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, tan theta is equal to RY upon RX. Then change the side of tan only. Tan inverse RY upon RX is theta and this is the direction of R bar. Okay, this is the direction of R bar. See here, only the two-dimensional coordinate system is given. If the three-dimensional coordinate system is given, means if Rx, Ry and Rz are the rectangular components of R bar along X, Y and Z axis of the rectangular Cartesian coordinate system in the three dimension. थ्री डायमेंशन में अगर देखो, थ्री डायमेंशन मतलब कैसे आएगी डायग्राम कि वेक्टर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया, ये हो जाएगी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और वी कैन से दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द थ्री डायमेंशन. तो अगर यहाँ पर ऐसा वेक्टर आर बार दिया है तो वो वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? सी वी कैन राइट दिस वेक्टर in terms of Rx, Ry and Rz. Rx bar plus Ry bar plus Rz bar. It is equal to Rx I cap plus Ry j cap plus Rz k cap. ठीक है? And similarly we can find out the magnitude. Magnitude here written in the mod sign R bar, mod R bar, or simply we can write R also. It is equal to square root of Rx square plus Ry square plus Rz square. ठीक है, ये हो गई रिजल्टेंट. Now here one condition is given. If two vectors are equal vector. What is meant by equal vector? Equal vector means that vectors corresponding components are also equal and vice versa. If two vectors are equal, it means that their corresponding components are also equal and vice versa. यहाँ पर a bar is equal to b bar दिया है, दो वेक्टर इक्वल है, but we can write a bar as a axi plus ayj plus azk. अभी मैं रीड करते समय कैप नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब वो नहीं देना है ऐसा नहीं है. इसने वो एक नहीं बोला. bxi plus byj plus bzk. Okay, if we compare this equation on the both sides, means if we compare coefficient of I cap, coefficient of j cap and coefficient of k cap, then we will get ax is equal to bx, ay is equal to by and az is equal to the bz. These are the equal vectors. ठीक है, ये हो गया वेक्टर के बारे में. We can split the given vector into its corresponding components is called as resolution of vectors. ठीक है, उसको बोलते हैं resolution of vector. देखो यहाँ पर सम दिया है सॉल्व करके. Just I will explain this sum. Find a unit vector in the direction of vector 3i plus 4j. ये एक वेक्टर दिया है, मतलब जैसे हमने यहाँ पर एक वेक्टर दिया है ना a bar is equal to axi plus ayj,
वैसे ही यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, उसको हम v भी कंसिडर कर सकते हैं. लेट v बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप. इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो अभी देखो, ये v बार हम ऐसे लिख सकते हैं. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. v बार इज इक्वल टू, we can consider alpha cap into magnitude of v bar. ऐसे हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. या फिर यूनिट वेक्टर अल्फा कैप इज इक्वल टू वेक्टर v बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v बार. ऐसे भी हम लिखते हैं, राइट. ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो अभी देखो, we have to first find out the magnitude of v. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड आउट किए है. v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर मैग्नीट्यूड एनी वेक्टर की फाइंड आउट करनी है. तो देखो फॉर्मूला यहाँ पर है 2.18 rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर v1 एंड v2 वो बोलेंगे हम, वो 3 एंड 4 है. अभी क्या बोलेंगे हम, v बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो कंपेयर करेंगे ना ये इक्वेशन और ऐसे फॉर्म में जो इक्वेशन रहता है वो इक्वेशन कंपेयर करेंगे. तो vx क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. vy क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. तो यहाँ पर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज रूट 25 इक्वल टू 5. ये हो गई मैग्नीट्यूड वेक्टर v की. तो अभी ये फॉर्मूला लिखेंगे. वेक्टर v इज इक्वल टू अल्फा कैप into magnitude of v, where alpha cap is a unit vector. और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना, अल्फा कैप. तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को अभी. अल्फा कैप इज इक्वल टू वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. तो वेक्टर v क्या है, 3i cap plus 4j cap is a vector divided by, just 1 minute. Okay, divided by magnitude of v. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आई है v की, 5. Therefore each equation is divided by 5 here. 3 upon 5 I cap plus 4 upon 5 j cap. This is the unit vector along the direction of vector 3 I cap plus 4 j cap. समझ में आया न्यूमेरिकल? Got it? No need to give answer. Got it? Yes or no? Okay, next example. Again, two vectors are given. A bar is equal to I cap plus 2 j cap and B bar is equal to 2 I cap plus j cap. These are the two vectors are given, A bar and B bar. We have to find out the magnitude of the two vectors. ये दो vectors की magnitude find out करनी है and explain करना है are these two vectors are equal or not. ये दो वेक्टर इक्वल है कि नहीं ये बस बताना है. सी हियर, दो वेक्टर इक्वल है कि नहीं बताने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, सी हियर, हियर इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड. फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का. तो ये यहाँ पे यूज किया है, ठीक है. वी कैन राइट ए बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप. तो a1 यहाँ पर 1 है और a2 यहाँ पर 2 है, ठीक है. दो इक्वेशन कंपेयर कर लो, ये दो इक्वेशन कंपेयर कर लो, ठीक है. तो a1 मिलेगा 1 एंड a2 मिलेगा 2. Take the square root and sum of the square, we get the root 5.
Same we have to use for B. A1 square plus B2 square under root, and again we obtain root 5. Here the magnitude of the two vectors are same, then the magnitude of A bar and B bar are equal, means their corresponding components are not equal. Here corresponding component A1 is equal to B1 है क्या? नहीं है, क्योंकि A1 1 है and B1 2 है, right? As well as A2 and B2 also not equal. ठीक है? But only magnitude is same. So the two vectors are not equal. Only magnitude is same is the answer. ठीक है? ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ. In the next period, we will learn how to take the multiplication of the two vectors. We will learn how to take the multiplication of the two vectors. Okay. Now, today we will not join again the meeting for the last 20 minutes. We will end the meeting here only. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay. किसी को डाउट है क्या? किसको डाउट है? Okay, then I will end the meeting. Please write that solved example in the notebook by understanding only. Don't copy only. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, चलो bye. Bye. Bye.